Assalamu alaikum students, I hope you all are well. Welcome to another lecture of chemistry in which we are studying chapter chemical thermodynamics. We have already completed many part of the chapter. Okay, today let's directly begin with today's topic, which is enthalpy of solution. We all know the meaning of solution. Solution is a homogeneous mixture which is formed by mixing solute and solvent. What is solute? Solute is the particles or the substance which is present in the smaller amount, and solvent is a part of a solution which is present in larger excess. Okay, so when we mix them together we get a homogeneous mixture of solution having only single physical state. Homogeneous mixtures have one single physical state. They will be either liquid or gas or solid. Okay, so generally when we talk about solution, we have in our mind a solution which is in liquid physical form. Okay, so let's see that what is mean by heat of solution or enthalpy of solution. The enthalpy of solution, you can see here, is defined as the enthalpy change in a process when 1 mole of a substance is dissolved in specified amount of solvent. So when you dissolve 1 mole of a solute in a specific amount of solvent, you will obtain what? A solution. And whatever amount of heat is absorbed or evolved during the dissolution will be termed as enthalpy of solution. Okay, remember students, enthalpy of solution can be positive or negative depending on the type of solution. Okay, at infinite dilution, the enthalpy of solution is the enthalpy change when 1 mole of a substance is dissolved in infinite amount of solvent. Okay, it means that when you do what? Make a solution of 1 mole of a substance at infinite dilution means what? The solution is so diluted that further addition of the solvent into the solution will not have any thermal effect on the enthalpy value. It means that you have added so much of the solvent into the solution that when you are adding the up to certain limit, you are going to observe the changes in the temperature of the solution. But after some time you will find what? Now the addition of the solvent into the solution is creating no more change in the heat of the system. So at infinite dilution, the enthalpy of solution at infinite dilution is the enthalpy change when 1 mole of a substance is dissolved in infinite amount of solvent. Such solutions are called as dilute solution. Okay, and the enthalpy of solution would be called as enthalpy of solution at infinite dilution. Okay, now in the given example it seems very simple that when we make the aqueous solution of salt, that is sodium chloride, the amount of heat absorbed is found to be 4 kilojoule. In this example it appears to us that when NaCl solution is made, we can easily find out that 4 kilojoule of heat is absorbed. Okay, but while calculating or determining the enthalpy of solution, we have to keep in mind that enthalpy of solution depends on 3 types of interaction that is present in the solution. What are these 3 types of interaction? It is solute-solute interaction, solvent-solvent interaction, and solute-solvent interaction. So enthalpy of solution depends on the magnitude or the value of enthalpy of solution will depend on these 3 interactions. What is meant by solute-solute interaction? We know that the solute particles which we are adding into the solvent to make a solution are held together by some intermolecular forces of attraction. When the solute goes into the solvent, the solute particle gets scattered. It means that the solute particle
are breaking their intermolecular forces of attraction so that it can get scattered into the solvent. So breaking of this solute-solute particle interaction requires some amount of energy. Okay, so for breaking the solute-solute interaction, energy will absorb. Okay, in the same way, solvent-solvent interaction, how it is contributing when the solvent molecules are also held together by some forces of attraction. Okay, so when we add the solute into the solvent has to accommodate or has to make space for these solute particles. Okay, so some amount of energy is also required to make the space for the solute particles by the solvent particles. So interaction between those solvent molecule has to be broken in order to accommodate the solute particles. Third one is solute-solvent interaction, and this is the major kind of interaction because it will contribute maximum to the enthalpy change. Okay, solute-solvent interaction is what? It is the interaction that has to be developed, or the force of attraction that has to be developed between the solute and solvent molecules or particles in order to form a stable solution. Okay, तो आपको समझ आ गया होगा कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन पे, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पे, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पे। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे को किसी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक फोर्स या कोवेलेंट फोर्स, जिस भी तरह का वो सॉल्यूट था, एक दूसरे को जो सॉलिड पार्टिकल्स पकड़े हुए थे उनको हमको सॉल्वेंट में बिखरा देना है। तो अगर उसको सॉल्वेंट में बिखरना है सॉल्यूट पार्टिकल को, तो उनको आपस में टूटना पड़ेगा, उनके अट्रैक्शन को टूटना पड़ेगा। ओके, तो उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होता है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी वही चीज़ है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़े हुए हैं, लेकिन जब हमको सॉल्यूशन बनाना है, इसका मतलब हमको सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉल्यूट पार्टिकल्स को घुसाना है, डालना है। तो जहाँ कहीं भी सॉल्यूट पार्टिकल्स जाएंगे स्कैटर्ड होके, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी, और जहाँ वो जगह बनाएंगे वहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर होना पड़ेगा और एक दूसरे से इंटरेक्शन ख़त्म करना पड़ेगा। इस काम के लिए भी एनर्जी लगेगी और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो ये भी कंट्रीब्यूट करता है किसमें? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के, टोटल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के कैलकुलेशन में। ठीक है, और लेकिन याद रखिएगा कि दैट सेकेंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन विल कंट्रीब्यूट लीस्ट अमंग दीज थ्री इनटू द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे कम होता है। द रीज़न इज़ ऑब्वियस, बिकॉज सॉल्वेंट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज एक्सिस एज कम्पेयर टू सॉल्यूट, यानी सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो सॉल्वेंट का इंटरेक्शन हमको इतना नहीं ब्रेक करना पड़ता है जब उसको कंपेयर किया जाता है सॉल्यूट के इंटरेक्शन से। ओके, थर्ड जो हमारा है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इसमें क्या होता है? इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स जब अगर एक स्टेबल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो उनको एक दूसरे को अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये वाला जो इंटरेक्शन है इसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी वन बाय वन ईच ऑफ दिस। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, here the particles are held together. We know that if you are assuming some ionic compound, the particles, the ions are held together by interionic attractions. Okay, energy is required to overcome these forces between the solute particles to dissolve the solute. It means if you want to make the solution, you have to provide energy to break the solute particles apart so that they can get dissolved into the solution. Okay, for an ionic solid, this energy is called as crystal lattice energy,
और क्रिस्टल, look here it is printed written on crystal lattice energy or crystal lattice enthalpy. Okay, so the amount of energy required to break the solute particles into its constituent ion is known as crystal lattice enthalpy. जो हमें एक मॉलिक्यूल को, क्रिस्टल के एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उस एनर्जी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी. सो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन? इट इज इक्वल टू क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी प्लस समथिंग एल्स. सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन का कंट्रीब्यूशन आपको कैसे पता चल जाएगा? अगर आपको पता चल जाए कि क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट क्या है. ओके, तो एक हमको यहाँ पता चल जाएगी कि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है. सेकेंड इज सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. Solvent particles are also held together by intermolecular forces. Now, during the dissolution process, the solvent molecules must separate and should make room for your coming solute particles. So, here again the energy will be required and absorbed, okay, but this will give what? This will contribute very little amount of energy. Therefore, while calculating the enthalpy of solution, the solvent-solvent interactions contribution is neglected. Solvent-solvent interaction का जो contribution होगा enthalpy change में, उसको हम लोग neglect कर देंगे क्योंकि बाकी दो के comparison में इसका contribution negligible होगा. Okay? तो आप बाद में जब कैलकुलेशन देखोगे तो आपको लगेगा कि इसको हम लोग ने क्यों नहीं कंसीडर किया. तो हमेशा याद रखना solvent-solvent interaction का contribution is very less as compared to the solute-solute and solute-solvent interaction. Therefore, we can neglect it. Okay, so it is negligible and neglected. The last one is what? Solute-solvent interaction. इस step में क्या होता है? Particles get surrounded by the solvent particles. Okay, and this process is known as solvation. और अगर water अपना solvent है तो it is known as hydration. This will be the major contributing factor in the enthalpy of solution. तो आप कौन सी दो चीज़ें पता अगर आपको रहेगी तो आप enthalpy of solution पता कर सकते हैं. नंबर एक, आपको अगर पता हो कि what was the contribution due to solute-solute interaction which is equal to its crystal lattice enthalpy I have told you. And number two is what? This, the solute-solvent interaction which is equal to what? Enthalpy of solvation. So for finding the enthalpy of solution, you must know what is crystal lattice enthalpy and what is enthalpy of solvation, and you can easily calculate what is the enthalpy of solution. How it is calculated? With the help of some method that is not discussed here, so we'll avoid it. Okay, let's see one example. In this example, look, it is mentioned here that an ionic compound Mx is taken. Okay, when Mx is a solute and this solute will break into its ion into the solvent. So reaction is given, Mx is breaking into M plus ion and X minus ion, and these are what? Gaseous ion. So if you know what is the enthalpy change for this step, that would be what? Your crystal lattice enthalpy, which is denoted by delta LH. आप देख सकते हो delta LH दिया हुआ है. Enthalpy change for this reaction is delta LH. Okay, which is always positive. Remember, for breaking of molecule, energy is always absorbed. Okay, it is not given out, it is always absorbed. अब सेकेंड स्टेप में आप देख रहे हो द आयंस आर हाइड्रेटेड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, so you have your what? Water ions, positive, negative ions. Okay, so these ions will get surrounded by what? Water molecules. Okay, and that hydration and enthalpy is will also be calculated. तो आपको कौन सी दो enthalpies मिल रही है यहाँ पे? Crystal lattice enthalpy for breaking of solute particles, for separating the solute particle into its constituent ions, and second is enthalpy of hydration, which is what? The enthalpy change that is observed for surrounding these ions. Okay, अब ये दोनों हमको पता है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि what is the enthalpy of solution.
यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड का अगेन। फॉर NaCl द क्रिस्टल लेटाइज एंथैल्पी इज 790 किलो जूल्स एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी इज -786 किलो जूल। तो 790 में से जब -786 करोगे ऑब्वियसली यू विल गेट 4 किलो जूल। ओके, so for this sodium chloride formation the enthalpy of solution is +4 kilojoule means what? The enthalpy of solution of sodium chloride is endothermic। ओके, यानी ये हीट एब्जॉर्ब करके ये सोल्यूशन बन रहा है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। Now thermochemistry. What is thermochemistry? It is the study of enthalpy changes in chemical reaction. Okay, so when you study the enthalpy changes in a chemical reaction, it means you are doing the thermochemistry. Now first let us understand how do we determine the enthalpy of reaction. What is mean by enthalpy of reaction? So what is enthalpy of a chemical reaction? It is the difference between the sum of the enthalpies of product and that of reactants with every substance in a definite physical state and in the amounts represented by the coefficients in the balanced equation. This is the definition of enthalpy of a chemical reaction. It means to find out the enthalpy of any chemical reaction, we must know what is the enthalpy of each reactant and product that are involved in the reaction. If we know that by doing the subtraction of the sum of the enthalpies of reactant from the enthalpies of the product, we can determine what is the enthalpy change for that particular reaction. We'll understand it better with the help of an example. Okay, so let's see the example. ये definition थी, अब definition को पढ़ें एक दो बार, ध्यान से समझने की कोशिश करो और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि example आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगी बात। ये देखिए एक example मैंने लिया है यहाँ पे, where we have considered that a hypothetical equation is there where AA plus BB is giving us CC plus DD। आप देख रहे हैं कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स से इक्वेशन में द स्मॉल अल्फ़ाबेट्स रिप्रेजेंट्स व्हाट? द कोएफिशिएंट्स, दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, और जो कैपिटल ABCD हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सम सब्सटेंस, कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो भी है वो। ठीक है, तो ऑल दिस स्मॉल ABCD आर एक्चुअली व्हाट? Numbers or coefficients, and capital ABCD are what? Representing some substance, compounds. For this reaction, hypothetical reaction, what would be the enthalpy change? That is delta RH. Okay, so according to definition, it is the difference between the sum of the enthalpies of the product and the reactant. ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट आप देख रहे हैं क्या है? C और D है, तो आपने क्या किया है? एंथैल्पी ऑफ C प्लस एंथैल्पी ऑफ D मल्टीप्लाइड विद देयर कोएफिशिएंट्स। आप देख सकते हो C कैपिटल स्मॉल c H और सबस्क्रिप्ट में दैट C रिप्रेजेंट्स योर कंपाउंड। ओके, देन स्मॉल d कैपिटल H और सबस्क्रिप्ट में जो D है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका कैपिटल D वो आपका कंपाउंड का नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। H का मतलब है एंथैल्पी और स्मॉल c और D का मतलब है कोएफिशिएंट्स अलोंग विद द पर्टिकुलर कंपाउंड्स। ठीक है, तो व्हेन यू सब्सट्रैक्ट द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम द एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट यू विल गेट व्हाट? द चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन। तो नीचे आप देख सकते हैं 4.29 इक्वेशन है, उसके अंदर सिंपल फार्मूला बता दिया है आपको। इफ़ यू नो दिस फार्मूला यू कैन डिफाइन योर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट विथ ईच ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट specified in a definite physical state with a proper coefficient
इन द इक्वेशन। जो भी कोएफिशिएंट रहता है आपको उससे याद से मल्टीप्लाई करना होता है अपनी इक्वेशन में, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नाउ अभी पढ़ा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अब हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? ओके, standard enthalpy of reaction is the enthalpy change accompanying the reaction when all the substances, that is all the reactant and the products that are present in the reaction are in their standard state। तो अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है सारे के सारे स्टैंडर्ड स्टेट में है तो आप उस रिएक्शन को बोलेंगे एक स्टैंडर्ड केमिकल रिएक्शन, और उस रिएक्शन की एंथैल्पी को आप बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, तो लेट्स सी वन एग्जांपल। ओके, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट। ओके, स्टैंडर्ड स्टेट से हमारा मतलब क्या है? किसी भी चीज़ की स्टैंडर्ड स्टेट को, कौन सी स्टेट को हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड स्टेट है? तो द स्टेट ऑफ सब्सटेंस दैट वी ऑब्जर्व when the pressure and temperature condition are as like it is mentioned here। अगर 1 बार प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी 298 केल्विन टेम्परेचर पे नेचुरली जो भी कंपाउंड एग्जिस्ट जिस भी फॉर्म में, जिस भी फिजिकल स्टेट और फॉर्म में करता है उसको हम लोग उसको बोलते हैं ये उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। जैसे वाटर, हमको पता है वाटर नेचुरली नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन जो है अपनी और जो नॉर्मल प्रेशर कंडीशन है विच इज़ 1 बार एंड 298 केल्विन, वाटर एग्जिस्ट एज H2O लिक्विड, है ना। वाटर वी नो कैन एग्जिस्ट इन द वेपर फॉर्म, कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन द आइस फॉर्म, इट ऑल्सो एग्जिस्ट एज आइस इन नेचर ऑल्सो। बट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर जो हमारी है जो कि 25 डिग्री टेम्परेचर है और 1 बार प्रेशर है, इस condition में water exists as liquid, so we'll say that the standard state of water is liquid H2OL। okay, अगर हमारा जो reaction है if it involves some solution, so if solution is there, remember the standard state of all the solution is it's 1 molar concentration। we know that solution can have varied concentration, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सोल्यूशन, लेकिन जब आप सोल्यूशन की स्टैंडर्ड स्टेट को की बात करेंगे तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सोल्यूशन क्या है, 1 मोलर है, ठीक है। तो द स्टेबल existence of a substance at 1 bar pressure and 1 at 298 Kelvin temperature is called its standard state। ठीक है, नीचे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए बहुत सारे कंपाउंड्स और एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड स्टेट है। H2 गैस, Hg यहाँ गैस लिखा है बट इट इज़ लिक्विड, ओके, इट इज़ प्रिंटेड रॉन्ग। Hg इज़ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की स्टैंडर्ड स्टेट इज़ लिक्विड। वी नो कि मर्क्यूरी कैसे एग्जिस्ट करता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे लिक्विड के जैसे। सोडियम सॉलिड, कार्बन ग्रेफाइट यानी कार्बन कोल के फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में, तो यहाँ पे ग्रेफाइट लिखा है, यहाँ सॉलिड भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है। अल्कोहल दैट इज़ इथेनॉल लिक्विड। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। Now let's see what is mean by thermochemical equation। Thermochemical equation, look in thermochemistry whenever we write the chemical equation, while we write those equation we follow some rules, okay, how it is presented, that equation is presented, that particular equation is known as thermochemical equation। Look here, it is mentioned that what is thermochemical equation? It is the balanced chemical equation in which the exact value of enthalpy change, physical states and number of moles of reactants and products are specified। Sorry।
जब भी आप एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि आप इक्वेशन लिखने के रहे जो उसमें हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के साथ उसकी फिज़िकल स्टेट को स्पेसिफाई करते हैं इसके साथ में ब्रैकेट में बाय राइटिंग द लेटर्स G, L और S और एक्वस एक ही। तो अगर आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड है तो आप उसके सिंबल के साथ ब्रैकेट में लिखेंगे S which represents or which is the denotation for solid. In the same way, if you have some liquid compound, you will write along with the name of that compound, you will write in the bracket L which represents that the compound is in liquid state. So physical state, we always mention the physical state of reactant and product when we write the any thermochemical equation. Along with it, you also write the proper coefficient, that is how many number of moles of reactants and products are involved in the reaction. You cannot write the unbalanced chemical equation. Correct method में you should always write what? A balanced chemical reaction involving what? Number of moles of reactant or product. If number of mole is 1, तो हम लोग नहीं मेंशन करते, हम लोग एक बार लिख देते हैं। अगर एक से ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के तो दैट हैज़ टू बी मेंशन। उसके साथ ही यू ऑल्सो राइट व्हाट? द डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। आप क्या लिखते हैं? एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, उसके राइट में, रिएक्शन के राइट में। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है थर्मोकेमिकल इक्वेशन का, कंबशन ऑफ मीथेन का एग्जाम्पल है जिसमें मीथेन गैस is burning in presence of oxygen gas and producing carbon dioxide gas and water liquid. So 1 mole of methane is reacting with 2 moles of oxygen. Look, the coefficients are mentioned properly. ठीक है, number of mole of reactant और product को हम properly mention करते हैं और हर molecule जो भी इन्वॉल्व है रिएक्शन में सबकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करते हैं। और इफ़ वी नो द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन दैट ऑल्सो वी राइट ऑन द राइट साइड ऑफ द रिएक्शन। यहाँ नीचे लिखा हुआ है लेकिन अगर स्पेस रहती तो हम इसे रिएक्शन की लाइन में ही राइट में लिखते। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स फिनिश टुडेज लेक्चर हियर ओनली। ओके, एंड बिफोर कंक्लूडिंग the lecture, let's try to revise what we have done today. Today we have done enthalpy of solution, where we have found how to determine the enthalpy of solution by taking into consideration the types of interactions that will contribute to the enthalpy of solution. Okay, that we have seen. After that we have discussed what is mean by a thermochemistry, what is mean by enthalpy change for a reaction, what is standard enthalpy of reaction, what is mean by standard state, and how do we write the thermochemical equation. Okay, so this much we have completed today. Inshallah we'll meet in the next lecture. Until then, please be safe, do study at your home. Khuda Hafiz.